Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 13.4 up to question number 4. Now I hope you have understood all the questions that have been done in the previous video. So let us now move on to the next question, that is question number 5. Right? Now in this question what is given to us is a hemispherical bowl made up of brass has inner diameter 10.5 centimeter. So यहाँ पे आपके पास क्या है, एक hemispherical bowl given है आपको. So let me first make a hemisphere structure like this, right? So this is a hemisphere, right? Now हमें इस hemisphere का जो diameter है, you can see inner diameter that is given to us. So यहाँ पे you can see there is some thickness of this bowl also. So that's why it is called as the inner diameter, right? So if I just draw it perfectly, so somewhere here, so you can see this is the thickness of this bowl, right? So let me just also draw it from here. So now you can see this inner diameter will be from here to here, right? So ये inner diameter आपको कितना given है? That is 10.5 centimeters. So this is the diameter given to us. So let us start the solution directly from the given thing. So यहाँ पे क्या given है आपको? Diameter given है. That is inner diameter, right? So if I just correct the spell, so that is given to us as 10.5 centimeters. So हमें पता है कि अगर diameter given हो तो radius कैसे find out करते हैं? Simply by halving the diameter. So half कर दूंगा मैं diameter का, that is 10.5 upon 2. अब चाहे तो आप radius को 10.5 upon 2 ही रख सकते हैं, or you can also convert it. You can see simply half कर दूंगा मैं 10.5 का, so that is 5.25, right? So half क्या होता है? अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो you can just simply solve it in rough. So आप देख सकते हैं ये था. Now इसका decimal remove करूंगा तो denominator में कितना आएगा? एक 0, because decimal के बाद एक digit थी. So अब मैं इसको remove करता हूं. So 2 10 20, then you know 2 5 10, then you can see further 2 2 4, 1 remaining. So we will put a decimal, that will become 10, then 2 5 10, right? So you can see अब denominator में कितना है? 10 है, एक 0 है, तो decimal एक digit पीछे shift हो जाएगी. So 5.25 you can see here, right? So you can see 10.5 का half क्या होता है? 5.25, right? So let us now move further and read the question. You can see find cost of tin plating it on the inside at the rate of ₹16 per 100 centimeter square. So आपको इसके अंदर वाले surface के ऊपर क्या करनी है? Tin plating करनी है, right? So this curved surface area, the inner curved surface area, उसके ऊपर क्या होगी? Tin plating होगी, right? So हमें पहले क्या find out करना पड़ेगा? Curved surface area, the inner curved surface area of this hemispherical bowl. Then हमें पता है कि इसका अगर इतना हिस्सा मान लेता हूं 100 centimeter square, so इसको plating करने का कितना चार्ज लगता है आपको? That is ₹16, right? So यहाँ पे 16 रुपीज लगते हैं इतना एरिया टिन प्लेट करने पे. तो टोटल इनर कर्व्ड सरफेस एरिया टिन प्लेट करने में कितना चार्ज होगा? सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय यू कैन सी 16 upon 100, right? That is of charge of 1 centimeter square, right? I will tell you later, but first of all we have to find out the inner curved surface area, right? So if I just look at the formula here, so what is the inner curved surface area of hemisphere? That is 2 pi r square, right? So यहाँ पे आपको पता है curved surface area क्या होता है hemisphere का? 2 pi r square. So let me just put the formula here. So यहाँ पे आप देख सकते हैं simply मुझे values को substitute करना है. So यहाँ पे 2 as it is आएगा into pi की value आपको पता है कितनी होती है? 22/7 into radius. Now radius is 5.25 whole square, right? Now further if I just solve this, so 2 into 22/7 into अब 5.25 को मैं दो बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, right? Like this. Now if I just remove the decimal, so denominator में क्या आएगा? दो digits थी तो 100 आ जाएगा. Similarly यहाँ पे भी denominator में कितना आएगा? 100. Now if I just rub this and you can see यहाँ पे मैं decimal को remove कर देता हूँ अब. So यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 के टेबल पे 7 1 7, then 52 है यहाँ पे, तो 7 you can see 7 7 49, कितने बच गए? 50 51 52, 3 बच गए. So 35 हुआ. So 7 के टेबल में 35 5 पे जाएगा. 7 5 35. So आप देख सकते हैं 7 के टेबल पे 5 25 75 पे reduce हो रहा है, right? Now further if I have to solve this, so keep these zeros in the denominator. So आप देख सकते हैं 100 into 100 कितनी zeros हो जाएंगी? 1 2 3 4. So 10,000
in the denominator, right? अब मैं न्यूमरेटर में सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेता हूं. So 2 into 22 कितना होता है? 44. 44 into 75. So let me just check out here. So 44 into 75, right? So 5 4s are 20, 0 2 carry. 5 4s are 20 plus 2, 22, right? Now multiply 7 4s are 28. 8 2 carry. 7 4s are 28 plus 2, 30. So there will be 0, 10, 1 carry. There will be 3 3. So 3 3 0 0, right? Now into you can see 525. So now we have to solve this. So आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे क्या सोल्व करना पड़ेगा? 3300 into 525. बट फर्स्ट यहाँ पे मैं 0 को रिड्यूस कर लेता हूं. सो टू मेक इट इजी, सो यहाँ पे आप मुझे 33 को 525 से मल्टीप्लाई करना है. सो 525 into 33. So 3 5s are 15, 1 carry, 3 2 6 plus 1 7, 3 5s are 15. Now further again 3 से 525 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 5 7 5 1 1575, right? So if I just add this, so 7 plus 5 क्या होगा? 12. 7 plus 5 12 plus 1 13. 5 plus 6 and 7, right? So 17325. So this is what we have got. 17325 divide by 100. So आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितनी जीरोस है? 2 zeros. So यहाँ पे 2 डिजिट से पहले क्या लगा दूंगा मैं? डेसिमल. So that will be 173.25. You can see centimeter square, right? Because यहाँ पे हमें जो डायमीटर था वो भी किसमें गिवन था? सेंटीमीटर में. एंड द कोस्ट इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दैट्स व्हाई इट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल. अब बात करते हैं रेट की टू टिन प्लेट फ्रॉम इनसाइड. सो इफ आई जस्ट मेक सम स्पेस, नाउ यू कैन सी इट इज गिवन दैट कॉस्ट ऑफ tin plating, you can see 100 centimeter square is 16 rupees, right? So यहाँ पे 100 centimeter square एरिया को tin plate करने का कितना चार्ज है? 16 rupees. अब हमें पता है 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 into 100. So यहाँ पे अगर मैं इस 100 को डिवाइड में भेज दूं तो मेरे पास 1 centimeter square अगर बात करता हूं, so 1 centimeter square tin plate करने का चार्ज आ जाएगा, राइट? So आप देख सकते हैं 1 centimeter square tin plate करने का चार्ज क्या हो जाएगा? That will be simply 16 upon 100. So ये 100 डिवाइड में आ गया. So आप देख सकते हैं 16 upon 100 क्या है? रुपीज चार्ज है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को टिन प्लेट करने का, राइट? नाउ हमें पता है कि टोटल जो कर्व सरफेस एरिया है जिसपे टिन प्लेटिंग होनी है वो कितना है? दैट इज 173.25. सो व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ टिन प्लेटिंग द कंप्लीट इनर कर्व सरफेस एरिया 173.25? दैट विल बी सिंपली मल्टीप्लाइड विद दिस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चार्ज, राइट? So that will be like this. अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ. So डेसिमल रिमूव करूंगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएंगे? 2 डिजिट है तो 2 जीरोस आ जाएंगे, राइट? So if I just further solve this, so आपके पास क्या है? 100 into 100 that will be 10,000 in the denominator. So अब मैं क्या करूंगा? 16 को 173.17325 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट? So यहाँ पे 17325 into 16, right? So if I just solve this, so 6 5 ja 30, 0 3 carry. Then 6 2 ja 12 plus 3 15, 1 carry. Then 6 3 ja 18 plus 1 19, 1 carry. 6 7 ja 42 plus 1 43, 4 carry. The 6 1 ja 6 plus 4 10, right? Now 1 से अगर मैं 17325 को मल्टीप्लाई करूंगा, so there will be 17325, right? Like this. So if I just add them, so 0 then 5 plus 5 10, 1 carry. 9 plus 2 11 plus 1 12, 1 carry. 3 plus 3 6 plus 1 7, then 7 and then 2, right? So 277,200, right? So यहाँ पे आपके पास क्या गया? 277,200. So यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी इसके साथ, आप देख सकते हैं. So अब डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं, यानी राइट हैंड साइड से 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा? डेसिमल. So 27.72 rupees, you can see simply will be the charge of, you can see, tin plating this inner curved surface area from inside, right? So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So this time question number 6 is given to us as, you can see, find the radius of a sphere whose surface area is given to us as 154 centimeter square. So यहाँ पे हमें already surface area given है एक sphere का, that is 154 centimeter square, right? So सबसे पहले solution में मैं क्या करता हूँ? लिख लेता हूँ that the given thing is the surface area of sphere, right?
So that is given to us as 154 centimeter square. अब बात करते हैं the surface area of sphere हम कैसे निकालते हैं, by the formula 4 pi r square, right? So यहाँ पे मैं इस की जगह पे क्या करता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, that is 4 pi r square. Now हमें ऑलरेडी जो हम सरफेस एरिया इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं वो गिवन है, सो मैं इनको इक्वेट कर देता हूं, दैट इज इक्वल टू 154, राइट? सो हमें क्या करना है, यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करनी है इस स्फीयर की, राइट? सो इफ आई जस्ट रफली ड्रॉ अ स्फीयर लाइक दिस, सो हमें क्या करना है, इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, राइट? सो हाउ वी विल डू दिस, सिंपली यहाँ पे रेडियस निकालनी है, तो लीव इट एज इट इज. अब पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 into r square as it is, right? Equal to 154. The surface area of this is given already, right? Now मैं क्या करूंगा, इस 7 को जो डिवाइड में इसको कहां शिफ्ट कर दूंगा, इन द मल्टीप्लाई ऑन द राइट हैंड साइड, एंड ये 4 into 22 जो है ये मल्टीप्लाई में इसको कहां शिफ्ट कर दूंगा, ऑन द डिवाइड ऑन द राइट हैंड साइड. सो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में r square, right? Equal to 154 जो प्रेजेंट था ऑलरेडी. नाउ ये 7 जो डिवाइड से वहां शिफ्ट होगा, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में. Then in the divide we will get 4 into 22, right? Now let me just tell you, 22 के टेबल में 22 1 जा 22, 22 7 जा 154, right? So 22 के टेबल पे मैंने इसको रिड्यूस कर दिया. Now हमारे पास क्या आ गया, 7 into 7 that is 49 divide by 4, right? अब आप देखें यहाँ पे r square है on the left hand side. So यहाँ पे हमारे पास पहले ये लिख देता हूं मैं कि r square कितना आ गया, 49/4. अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में मैं अगर ये स्क्वायर रिमूव करता हूं r के ऊपर से, सो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, दैट इज √49/4, राइट? सो मुझे पता है कि 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2. तो दोनों बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट से, बिकॉज 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2. सो 7/2 दैट इज 3.5. सो द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच वाज रिक्वायर्ड हियर, that is what we have calculated, that is 3.5 centimeters, right? So quite easy, just you have to simply apply the formula of the surface area of sphere, and already you can see the surface area is given, so simply equate it with this, and solving this will give you the answer, that is the radius of this sphere, right? So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So this time question number 7 is given to us as, you can see the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth, right? So जैसा कि यहाँ पे given है कि moon का जो diameter है वो क्या है, 1/4 है किसके diameter के, earth के diameter के. It is obvious कि जो moon का diameter है that is quite big than the you can see earth, because moon का size बहुत बड़ा है respective to the earth. So यहाँ पे आप, अगर मैं यहाँ पे दो figures बना लेता हूँ of a sphere like this, so this is a moon and this is earth, right? So यहाँ पे मैंने earth का diameter बना लेता हूँ, earth बना देता हूँ, right? So यहाँ पे अगर मैं दोनों के diameter की बात करूं like this, so यहाँ पे अगर मैं इस moon का जो diameter है इसको dm से represent कर लेता हूँ, m for moon, right? Then इस अर्थ का डायमीटर जो है इसको मैं डी ई से रिप्रेजेंट करता हूं फॉर अर्थ, राइट? सो लेट अस फर्स्ट assume the diameter of moon and earth be dm and de respectively, right? Then further, अब मैं बताता हूं आपको, यहां पे हमें करना क्या है, we have to find the ratio of their surface area, right? So अगर मैं इसका surface area मून का क्या मान लेता हूं, sm, और अर्थ का क्या मान लेता हूं, se, right? Also you can see, assume the surface area of moon as sm and of earth as se, right? So यहां पे दोनों का सरफेस एरिया भी मैंने sm और se रिस्पेक्टिवली एज्यूम कर लिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, दैट इज टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन इज sm/se, right? So this is what we have to find out in this question. Now we know that both moon and earth are spheres, so
to find out the surface area of both the spheres will be from the formula 4 pi r square, right? अब जैसा कि हमें डायमीटर गिवन था, हमें क्या चाहिए फॉर्मूले के लिए? रेडियस. सो लेट अस टॉक अबाउट द रेडियस. सो in the solution here, so first of all, let us assume the radius of moon and earth as rm and re, right? So अगर diameter dm है मून का और अर्थ का डीई, तो रेडियस क्या मान लेता हूं मैं इनकी? आर एम और आर ई, राइट? सो दैट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि आर एम का मतलब है रेडियस ऑफ मून एंड आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, राइट? सो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था दैट द डायमीटर ऑफ मून, नाउ लेट मी फर्स्ट राइट दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या गिवन है? दैट द डायमीटर ऑफ मून इज सिंपली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, राइट? सो यहां पे मून का जो डायमीटर है ये अर्थ का क्या है? 1/4 है, राइट? सो दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ फर्दर इफ आई जस्ट मूव हियर, सो यहां पे अब मुझे पता है कि डायमीटर एक्चुअली क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, राइट? सो अब देखिए दो रेडियस मिला के एक डायमीटर बनता है. सो डायमीटर ऑफ मून की जगह मैं क्या रख दूंगा? ट्वाइस ऑफ rm, that is the radius, right? So diameter की जगह मैंने क्या रख दिया? twice of the radius of moon, right? So diameter of moon क्या होगा? दो मून की रेडियस मिला के बना हुआ है, right? Then equal to 1/4. अब diameter of earth किससे बना है? twice of the radius of earth. So दो बार रेडियस मिलाऊंगा अर्थ की, तब जाके क्या बनेगा? You can see हमारे पास the diameter of earth, right? So now if I just solve this, so आप देख रहे हैं 2 से 2 cancel out हो गया. So this implies, you can see radius of moon will be equal to 1/4 radius of earth, right? So जैसा कि अगर diameter जो है moon का वो 1/4 है earth के diameter से, similarly radius of moon भी क्या होगा फिर? 1/4 होगा radius of earth के, right? So this is in the straight comparison. जैसा कि diameter का comparison इन रिस्पेक्ट टू अर्थ के है, मून का अर्थ से, सो रेडियस भी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा? 1/4 ही होगा, राइट? सो द रेडियस ऑफ मून इज सिंपली 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ एज वेल, राइट? नाउ एज वी हैव गॉट हियर, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंपली ट्रांसफर दिस 4 ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड इन द मल्टीप्लीकेशन. सो यहां डिवाइड से इसको कहां शिफ्ट कर रहा हूं? मल्टीप्लाई में. सो 4rm विल बी इक्वल टू re. 1 into re क्या होता है? re. So let me just give it equation number first. So here it is representing that the radius of earth is 4 times the radius of moon, right? So यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, right? So if I just further solve this, so I'm going to erase this. Now you can see, अब बात करते हैं इसके surface area of the moon, right? So the surface area of moon is simply, you can see 4 pi r square. इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. नाउ मुझे पता है रेडियस क्या है मून की? दैट इज rm. सो दैट विल बी rm स्क्वायर, राइट? सो यहाँ पे रेडियस rm रख दी मैंने. नाउ यू कैन सी, अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं? 4 और पाई को एज इट इज रख रहा हूं. नाउ यू कैन सी rm स्क्वायर विल ऑल्सो बी एज इट इज. सो लेट मी जस्ट गिव इट इक्वेशन नंबर 2. नाउ लेट मी जस्ट ऑल्सो फाइंड आउट द surface area of, you can say, earth, right? Again हम इसकी हेल्प से इसका surface area कैलकुलेट करेंगे. So 4 pi r square. So अब अर्थ की रेडियस क्या है हमारे पास? re. So that will be re square, right? अब अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, so हमें पता है re की वैल्यू किसके इक्वल है? 4rm के. So यहाँ पे मैं re की जगह क्या लिख दूंगा? 4rm होल स्क्वायर, राइट? सो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सो 4 पाई एज इट इज. नाउ अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूं तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 into 4 16, और rm का स्क्वायर क्या हो जाएगा? rm स्क्वायर, राइट? सो नाउ यू कैन सी 4 into 16, दैट विल बी 64 pi as it is, then rm square, right? So let me just give it equation number 3, right? So हमारे पास आप देख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ मून भी आ गया, that is 4 pi rm square, और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ भी आ गया, that is 64 pi rm square, right? Now हमें क्या करना है? Simply रेशियो फाइंड आउट करना है, sm upon se. So let us do that.
So now you can see the SM upon SE, that is the ratio of the surface area of moon and earth will be, you can see surface area of moon के आपके पास, that is 4 pi rm square. So let me just write that, divide by आपके पास देख सकते हैं surface area of earth कितना है, that is 64 pi re square, sorry rm square, right? So ये आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज मैंने यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से इन दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट? अब आप देखेंगे ध्यान से कि पाई से पाई कैंसिल, rm स्क्वायर से rm स्क्वायर कैंसिल, सो आपके पास बचा क्या 4 upon 64. नाउ एट द टेबल ऑफ 4, 4 1 जा 4, 4 16 जा 64. So 4 के टेबल में 16 पे 64 कट हो गया, so that will be 1 upon 16, or you can also write the ratio will be 1:16. So this is the ratio of the surface area of moon with respect to surface area of earth, that is 1:16, and that is what we have to find out in this question. So just you have to simply remember that the formula is this, and you can see you can just simply represent the diameter and the radius of the moon as dm and rm, and the diameter and radius of earth as de and re, right? Then you will simply apply on the formula of the surface area of moon and earth and substitute the values here, and according to the condition given to you that the diameter of moon was 1/4 of the diameter of earth, then with respect to same you can see the radius of moon will be 1/4 of the radius of earth. Then simply shifting the 4 on the left hand side and substituting the radius of earth as 4 times of the radius of moon, you will finally get the surface area of both the moon and the earth, and substituting it here in the ratio, you will get the ratio as 1:16. So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So this time question number 8 is given to us as a hemispherical bowl is made of steel. So यहाँ पे एक hemispherical bowl है जो किससे बना है, स्टील से बना है, which is 25 centimeter thick, right? So let me just first make a hemispherical bowl here, right? So you can see it is something like this. Now let me just tell you there is a thickness of 0.25, right? So let me first make the thickness. Right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है thickness है of, you can see 0.25 centimeters, right? So this is the thickness of this bowl which is made of steel. So now if I just make it complete here, so आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब मैं बात करता हूं आगे. So the inner radius of the bowl is 5 centimeters. So अंदर की रेडियस क्या होगी, इस पॉइंट से लेके ये सेंटर तक का डिस्टेंस, राइट? सो इफ आई जस्ट रिप्रेजेंट इट बाय स्मॉल r, सो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं इनर जो आप देख सकते हैं रेडियस गिवन है मुझे, आई एम टेकिंग इट एज स्मॉल r. सो वो कितनी गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर्स, राइट? नाउ आगे बढ़ते हैं. वी हैव टू फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, राइट? सो हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल फाइंड आउट करना है. सो दैट इज दिस, राइट? जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, राइट? सो मुझे अगर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, we know that the curved surface area of hemisphere is calculated by 2 pi r square. अब अगर मुझे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो आउटर रेडियस पता होनी चाहिए, राइट? बट मुझे इनर रेडियस गिवन थी. सो कैसे मैं आउटर रेडियस निकालूंगा, आप देखिए ध्यान से. अगर मैं इस इनर रेडियस के अंदर ये थिकनेस को ऐड कर दूं, सो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देयर विल बी द आउटर रेडियस, जिसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूं, राइट? सो आप देख सकते हैं यहां से सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, 5, और इस पॉइंट से लेके ये थिकनेस इसमें ऐड कर दूं, सो दैट टोटल लेंथ विल बिकम द आउटर रेडियस, राइट? सो यहां पे मुझे गिवन क्या था, द इनर रेडियस, राइट? सो लेट मी फर्स्ट राइट दैट. सो जिसको मैंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया, दैट इज 5 सेंटीमीटर्स, राइट? देन मुझे और क्या गिवन है, सिंपली द थिकनेस. सो द थिकनेस इज गिवन टू मी एज 0.25 सेंटीमीटर. सो अगर मुझे आउटर रेडियस की बात करूं, सो आउटर रेडियस which is represented by capital R, so that will be simply, you can see inner radius plus thickness. So अगर मैं inner radius के अंदर आप देख सकते हैं thickness को ऐड कर दूं, so that will be the outer radius, right? So inner radius plus thickness, so that will be,
you can see 5 centimeter plus thickness is 0.25 centimeter, right? So 5 plus 0.25, that will be 5.25 centimeter, right? अगर आपको confusion है, so you can see 5 के आगे कुछ नहीं है तो 0.00, then 0.25 इसमें add करूंगा, so that will be simply 5.25, right? So this will be the outer radius, which is capital R, right? So अब जैसा कि मुझे capital R पता है, now we can simply apply on the curved surface area formula, that is 2 pi r square. So the curved surface area of a hemisphere is 2 pi r square. Now यहाँ पे मुझे outer curved surface area निकालना है. Formula will be this, but the radius will be outer radius. So there will be capital R here. So let us now move on to find out the outer curved surface area. So that will be calculated by 2 pi r square. So r will be the capital one because हमें outer radius निकालनी है, उसकी radius क्या है? Capital R. So now simply you have to substitute the values. So 2 into 22/7 pi की value into r. So capital R is 5.25. Square means let me just directly multiply it twice. So दो बार multiply कर दिया. Now decimal remove, in the denominator you will get 100. Again decimal remove, there will be 100 in the denominator. So if I just remove this decimal here, so 7 1 is 7. Now 7 7 ja 49. Then you can see 3 remaining, they will make 35. Then 7 5 ja 35. Now मैंने जैसा आपको बताया कि डिनोमिनेटर में अगर 100 यानी जीरोस की फॉर्म में हो तो इजीली सॉल्व हो जाता है. So 100 into 100, that will be 10,000, right? So 4 zeros in the denominator. Now simply multiply these values, right? So 2 into 22 is 44. 44 into 75. So 75 into 44, that will be 4 5 is 20, 2 carry, 4 7 is 28 plus 2, 30, right? Let me just cross check. So 4 5 is 22, 4 7 is 28 plus 2, 30. Then multiply sign, again that will be 300, right? So 3300. Then let me just write it first here. So 3300 into, you can see 525. Now you can see 2 zeros will be cancelled out. So 33 into 525 divide by 100. So 525 into 33. Let me just solve it here. So 525 into 33, right? That is what we have to solve. So 3 5 ja 15, 1 carry, 3 2 is 6 plus 1 7, 3 5 ja 15. Then you can see again multiply, then the same thing will happen. So 1 5 7 5, right? Then let me just add them. So 5 7 plus 5 12. So that will be 13. So 5 6 7 and 1. So 17325. So there will be 17325. Now you can see there are 2 zeros in the denominator. So दो digit से पहले क्या लग जाएगा? Decimal. So 173.25 centimeters square, right? So you can see this will be the outer curved surface area of this hemispherical bowl made up of steel, which is having the thickness as 0.25 centimeter, right? So just remember, to find out the outer curved surface area, you have outer radius, you have to first find out the outer radius by adding the inner radius and the thickness. That is the important thing here, right? So as you have now got the outer radius, you can simply apply on the formula to calculate the curved surface area, outer curved surface area, right? So that will be simply capital R at the place of R because it is outer radius. So simply solving it will give you the curved surface area, the outer curved surface area, right? So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now, which is going to be the last question of this exercise. So let us move on to it. So यहाँ पे question number 9 जो है, इसमें given है that a right circular cylinder just enclosed a sphere of radius r. So यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो figures आ गए हमारे पास इसके अंदर actual में, एक तो cylinder which we have done earlier and a sphere enclosed by this cylinder. So आप देख सकते हैं ये sphere जो है इसको ये cylinder ने occupy कर रखा है पूरा. So ये sphere एक तरह से cylinder के अंदर है completely, right? It is of the, you can see, completely occupying this cylinder, right? So ये sphere जो है completely occupy कर रहा है इस cylinder को. Now we have to find the surface area of the sphere, right? So यहाँ पे हमें given है कि sphere की जो radius है that is r. So let me first start off the solution here. So given, you can see the radius of sphere, right? So that is, you can see small r, right? So यहाँ पे अगर मैं इसको draw कर लेता हूँ radius को, so that you can see the distance of the center to the point on the
circumference of the sphere, that is known as the radius, right? So यहाँ पे r given है, right? Now to find out the surface area of the sphere, we know that we have to apply on this formula, right? So 4 pi r square. So you can see in the first part, so the surface area of sphere is 4 pi r square. So आप देख सकते हैं r की जगह r ही substitute होगा. So this will be simply the surface area of this sphere, right? So that is what we have to calculate in the first part, and that is 4 pi r square. Now moving on to the second part here. So यहाँ पे मुझे क्या find करना है? The curved surface area of the cylinder. Now remember what was the formula to calculate the curved surface area of the cylinder? We have done earlier. So that was, if you remember, 2 pi r h, right? So that was the curved surface area of a cylinder, right? So if I just remember the curved surface area of, you can see cylinder, right? So that is 2 pi r h. So this is the formula to calculate the curved surface area. अब हमें यहाँ पे required क्या है? The radius and height, right? So now let me just tell you, यहाँ पे ये सबसे पहली चीज क्या होगी? हमें height जो है यहाँ पे जो इस सिलेंडर की है, from this point to this, that is the height of the cylinder. So आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट से आप देख सकते हैं जो स्फीयर है वो नीचे वाले बेस को टच कर रहा है. सो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे जहां पे एक्चुअल में ये इसको भी टच कर रहा है, राइट? सो लेट मी जस्ट टेल यू, द स्फीयर इज टचिंग एक्चुअली द टॉप आल्सो, राइट? सो यहां से ये डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज आल्सो द रेडियस ऑफ द स्फीयर. इफ यू जस्ट सी हियर, सेंटर से स्फीयर का ये पॉइंट जो है, दैट इज आल्सो द रेडियस. सो यहां पे आप देखिए रेडियस एंड रेडियस टुगेदर, यू कैन सी दैट विल बी 2r, राइट? सो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 2r, राइट? ट्वाइस ऑफ द रेडियस. सो दो रेडियस मिला के यहाँ पे जो है स्फीयर का डायमीटर बन गया एक तरह से, एंड दैट इज एक्चुअली द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, बिकॉज सिलेंडर जो है पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है इस स्फीयर को. सो ये एक तरह से हाइट होगी किसकी? सिलेंडर की. दैट इज 2r. सो ये दोनों लेंथ मिला के 2r बना, विच इज वर्किंग एज द हाइट फॉर दिस सिलेंडर. सो h की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 2r, राइट? सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ h की यहाँ पे क्या प्लेस कर दूंगा? 2r. So let me just write. So you can see the curved surface area of cylinder, which is calculated by the formula 2 pi r h. So यहाँ पे आप देखिए 2 pi r मैं as it is पढ़ा रहने दूंगा. So further you can see h की जगह मैं क्या रख दूंगा? 2r. So 2r, right? So आप इसे लेना 2 into 2, that will be 4 pi as it is. R into R, that will be R square, right? So this is the curved surface area of the cylinder that we have calculated here. Now that was the answer to the second part, right? Now let me move on to the last part, in which we have to calculate the ratio of the areas obtained in first part and second part. So that means we have to find out the ratio of the surface area of the sphere with respect to the curved surface area of the cylinder, right? So let me first make some space above. So in the third part, the ratio of surface area of sphere to the surface area, the curved surface area, right? So the curved surface area of cylinder, that is what we have to find out. So आप देख सकते हैं यहाँ पे the surface area of sphere जो है वो हमने क्या कैलकुलेट किया था? That is 4 pi r square. Then the sign of ratio. Then the curved surface area of cylinder. You can see again we have calculated it as 4 pi r square. So this will cancel out each other. So there will be 1:1, right? So ये सारा इससे cancel out हो जाएगा, same value है. So 1:1. That will be the ratio of, you can see, the surface area of sphere and the curved surface area of the cylinder. That is what we have to calculate in the last part, right? So this is how we come to the end of this exercise. So that was all in this exercise here.